Okay, so good afternoon to all. Good evening, sir. Okay, so only okay, let 6 to 3. Only 15 students are there, including me. Okay, we start with the term sharing the slides. I mean, screen to be there. Thereafter, to move. Hmm. I think the screen is visible. Whiteboard. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in the last class, we covered different term. What is called as the matrix. Thereafter, the term determinant. Right, and how to calculating the term inverse, what is minor, what is cofactor, those Transpose things of is the to be completed in the last class. Today we have to start with the solving the simultaneous equation with the help of matrix as well as your determinant. Okay. Before we starting the term, how to calculate the term, that is the solving the simultaneous equations with the matrix and determinant. Let's say start with an equation. Suppose we take 3x plus 2y that equals to, let's say assuming it becomes 7. And next one is to be, let's say x minus y, or let's say the 2x minus y that equals to, not 2x minus y, let's say 2x minus 3y, right? 2x minus 3y that equals to minus 10, right? So what comes besides the question, how we find the value of the, find the value of, find the value of x and y, right? With matrix method, with matrix method. Now how to finding it out? Actually, we already know in matrix method, first we have to, let's say this is the question. Now we have to try to solving it. This can be written as 3, 2, 2 minus 3, then x and y that equals to 7 minus 10. It is not minus 10, actually it will be 4, 4, 3, 7. Take it, it should be there, no doubt. It's not 4, it will be 6, 6 minus 2. Let's say we change this one, moving to the eraser. Let's say 6 minus 2, it becomes -4. हम वो क्लास से पढ़ के now okay. Able to synchronize the chains, please. Okay. Hello. अरे मैं क्लास रहे से मुझे क्लास करके फोन करिए ना. ओके ओके. Uh, just wait for a minute. It was little unfortunate. Good minute, wait कर. It takes some time to open. Right.
Right now it is visible? Yes, sir. Okay. Actually, some problems are there. Okay. Still, then it is not working. Oh no, huh. So actually, it is not 10. Rather, we have to take into account this it turns to be uh, just a minute. More nature actually answer no more 1 out 2. Right. Sethipai 4 3 7 first ठीक अछि. -6 हेले -6 plus of 2 हेले केता हो? -4. -4. Right. So I mean नवाताको -4 let's say. मुझे इरेजर टा मारला बेलକୁ से कोन गैप हे गेला कोडे. Okay, ठीक अछि. Now, let's say we are to moving forward. We assume this is to be, let's say the matrix A, this is the matrix X that equals to matrix B. Now, AX equals to B. Okay. So, as it be AX equals to B, that means X equals to the power. Now, A inverse into B. So, we प्रथमे A inverse calculate करिबा तापरे B को multiply करिबा to find the solution of X and Y. So A inverse we can calculate. Now we already know A inverse. It can be calculated adjoint of A divided by determinant of A. Now, what is the value of the determinant? Let's say it is 3, 2, 2 minus 3. And the value of the determinant is 3 minus 9 minus 4. It becomes minus 13. Right? Then we have to, after knowing that this is not equals to 0, it's right. Now move to the term how to find the term adjoint. Now I say adjoint of A, it can be calculated. Row टा column हे जिवो 3 2 2 minus 3. CIJ में बाहर करिबा CIJ बाहर कर सला पे तार ट्रांसपोज हमें करिबा. Right? So adjoint is nothing but the CIJ of a transpose. So we have to calculating the CIJ. So let's say we have to take the C11. C1, it becomes how much? -1 whole to the power first row, first column into -3. It becomes -3. Similarly, C12, first row, second column. So it becomes first row, second column, and it's minor, it becomes 2, and thereby it becomes -2. C21, first, second row, first column, second row, first column, it becomes 2 also again, and it is again -2. Right? And thereafter, we have to calculating the term what is called the C22. So -1 will be by second row, second column, and its minor is 3, it becomes 3. Then, cofactor ke dala na Cij of A, it becomes na -3, -2, -2, and 3. Right? So this is called the cofactor. So I make cofactor calculate कर ले. हमारा adjoint देखा ना adjoint of A यार cofactor और transpose. हमें देख ले cofactor कितने ना -3. सर फास्ट C11 second. Right. Got a minute. Wait. हमें question ठीक लिखी छे. Question लिखले 3, 2, 2 minus 3. Yes, that's right. No problem. Then हमें determinant calculate कर ले 3, 2, 2 minus 3, and it becomes -9 minus 4. Okay, this is right. No problem. Now C11 हमें C11 करीबा first row first column में बाहर करीबा first row first column में बाहर करीबा -1 whole to the first row first column into minus this, so it becomes ये भी right ही अच्छी. Okay, यार भी problem नहीं. ना सर -3 नो सर का अच्छी 3 ही अछि सर एटा C11 ने 3 ही अछि तमे -3 सर आपको लेट अच्छी तमे केमिति कैलकुलेट करियो जानछडी. ओके छाड़ हमें CI got a second, have patience Raka. Just a minute, have patience. Got a minute. Okay, what is this? Just a minute. तमरा कौन काम करछे के टाइम पर करछे तम बोर्ड रे की रखु से जानि पनी. So actually कौन होची
हमारा को माइनर किन बाहर करा जाए टेल मी द माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर ऑपोजिट में जो रहते हैं okay that's right absolutely right then Cij can calculate करके what is the formula of the Cij I'm unable to write because someone to be tamper on the board लिखी होनी लिखी पारनी मो board रे someone to be tampering the board therefore I'm unable to write it down just a minute I have to stop share and once again I have to be moving it okay person that we got a second all right now we have to moving to you people and let's say sharing the slide with you okay कौन कहते मु ना माइनर सपोज हम माइनर हमें बाहर करिबा माइनर जेतले हमें बाहर करछे लेट्स से Cij if you taking down the Cij of a can calculate करछे ना -1 एटी रहउची to the power I plus j into the minor mij so हमें जेतले माइनर लिखुचे माइनर केन कैलकुलेट करा जाए इग्नोरिंग द रो एंड कॉलम सो हमें जेतले 3 रो जेतले हम माइनर माइनर बाहर करिया माइनर केते हबो -3 इट इज माइनस -3 सो केमिति हबो +3 बोली कहउछ मते मु जानि परनी माइनस तापर प्लस नहीं हां माइनस ही रहेगी it is to be -3 I think it will be right yes or no यस सर Yes, sir. तापर सेकंड जेतले हम बाहर करछे -1 फर्स्ट रो साइड फर्स्ट कॉलम बटन 2 ए 2 रो माइनर के 2 2 लेकर -1 to the power 3 केते रहले again -1 so therefore -2 it is right then हमें second रो फर्स्ट कॉलम करछे 2 to the power 2 plus 1 into 2 then it again -2 and -3 जेतले करछे -1 whole to the power 2 ठीक तो अछि असुविधा कोन होतो मु तो ठीक बाहर करछे नहीं राइट हां असुविधा कोन होछि it is right तमरा बुझिबारे टिके भूल हे जाइछ ठीक है हां then after that it is the 3 -2 and 3 -2 and 3 here हमें transpose बाहर करिबा while you take into account the transpose then adjoint हबे लागते adjoint of a it becomes -3 -2 again same ही रहइबा कारण हमरा रोटा कॉलम चेंज कर देबे एग्जाम रिजल्ट सेम ही रहउछे right माइनस then comes down to the inverse a inverse बाहर करिया केनती ना adjoint of a divided by determinant of a ଆମର adjoint बाहर कर सारछे adjoint हला केते ना -3 -2 and 3 ता सहित हम डिवाइड करिवा माइनस केते बाहर थिला 13 or 11 okay 13 सर -13 by now we have to take the case 1 by 13 okay ताको हमें बाहर रखिवा it is better for us then it will be 3 2 2 -3 this is your inverse now after calculating the term inverse then हमें कौन जाइबा ना x करिबा x का वैल्यू कौन थिला ना a inverse into b so a inverse it becomes 1 by 13 3 2 2 -3 ताको हमें मल्टीप्लाई करिया को ना b रे so b हमर केते थिला ना b थिला 7 and -4 right so you have to put down the 7 and -4 so it becomes 7 and -4 so while you do that like multiply kariba 1 by 13 is there as such now row or column multiply karava so it becomes 21 then plus of minus is your -8 then here comes to the 14 then plus of 12 okay then it is 1 upon 13 and it to be 21 minus 8 is how much 13 and 14 plus 12 which is 26 26 then it is the 13 upon 13 and it is 26 upon 13 so the outcome is to be 1 and 2 1 2 right
right? So x वाला कहते हैं ना, x we know, we take into account x is nothing but xy, and that equals to 1 and 2. So therefore, this implies that x equals to 1 and y equals to 2. ଜାଣିହେଲା? पूरा details करिवो, कौन से step छाड़िबनी, पूरा systematically जदि पढ़िबो, that way ही करिवो. Now it is clear how to find the value of x and y. You can cross check it by putting inside the equation. ଯେକୌଣସି equation ଆମେ ଏଠି ପକେଇକିରି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ. So it will be the x equals to 1 and y equals to 2. If putting it, the 3 into 1 is 3, 2 into 2 is to be 4, 4 plus 3 is 7, right? So that's the way to calculate the value of your x and y. Okay. So I mean like the two variable I mean now ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ question ଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ତମେ solve କରିକି ଦେଖାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ. Let's say I take into account 3x minus y plus z and x plus up to y minus of z, and we take another one, let's say 2x minus 3y plus z, right? And the outcomes are to be, let's say it is to be, I take into account okay. So these are the outcome. Now try to solve the value of x, y, and z with the help of the matrix method. Quickly solve करी वो के देला आंसर. बुझी पहले टी concept केन calculate होची. मगर समझ से बुझी पहले था. Yes, sir. Okay, now solve it. Minus 1, 2 and minus 3. This becomes 1 minus 1 and 1. X, y, and z. That equals to 1, 5. Same pattern, same process. Ax equals to b, x equals to A inverse into b. Then you have to calculate the A inverse. In same way, you have to calculate A inverse. Adjoint of A divided by determinant of A. First, you have to find the determinant value. The determinant value so find the determinant value. So what is the determinant value? -7. ये लॉक कर दो जी बोर्ड का. वर्तन ठीक है. The board को 11. lock. Okay, just a minute. Someone say -7, someone say 11. Okay, let's say start with me solving by me. It is a 3 into 2 minus 1 minus 3 and 1 minus of minus of minus 1. Okay, and it becomes, let's say it is a 1, 2 minus 1 and 1, and let's say plus of 1 into 1, 2, 2 and minus 3, right? So it becomes 3 whole into 2 minus 3 plus of 1 into 1 plus 2 plus 1 into minus 3 minus 4.
So it is nothing but -3, right? Plus of 3, it is 3. Then minus of 12. No, not Minus minus, not, it is 7. 7. -7. So it become answer is -7. So car 11, 12 vartla. It become -7 only. ঠিক আছে? Yes, sir. So ठीक. हाँ, बर्तन -7 बाला. बर्तन सबू कैलकुलेट करो. कौन कैलकुलेट करिवो? ना माइनर कैलकुलेट करिवो सब. माने डायरेक्टली कोफैक्ट होगा. C11 केते हबो? Now C11 is nothing but -1 whole to the power first row first column into it should be 2 minus 3 minus 1 and 1. So ये भीतर value केते रहउची ना एते तो बाद जो plus हिजिवो then भीतर रहइबो केते ना it is 2 plus of 3 sorry 2 minus of 3. 2 to Minus minus 1. of comes -1. In the same manner, the 1 to first row second column -1 whole to the power first 1 plus 2. So 1 plus 2 means it becomes 1, 2, 1, 2, -1 and 1. So it will have a minus, then it will be 1 plus of 2, it becomes -3. Minus 3. Then 1, 3. So -1 whole to the power first row third column. So first row third column ରହିବ କେତେ? Now 1, 2, it is 2 minus 3, and it is to be plus ହେଇଯିବ. 3 plus 1 is 4, therefore it is plus, no change. -3, -2, sorry, -4, it becomes -7. Similarly, C 2, 1, second row first column. Second row first column, to them no change. -1 whole to the power second row plus of first column. Then second row first column. Okay. So then we don't know over the value. Was -1, 1, -3 and 1. So 2 and 3 is minus. So it becomes -1 plus of 3. It is to be 2 and outcome is to be -2. Then C2 to second row. You have taken into account the second row, second column, -1 whole to the power second. So it becomes 3, 1, 2, 1. And the outcome turns to be, okay, it is 4, Minus 3 minus of 2, it is 1. Okay. 3, 2, 3, -1 whole to the power, second row, third column. Second row, third column, it is 3 minus 1, then 2 minus 3. So 3 to 5 minus is 0, then it becomes -9, then plus of 2, then it is a +7. Okay. Then Yes, comes sir. to the third row. Okay. C31. C31 means -1 whole to the power third row first column. Third row first column আমি যেটা নৌছে third row first column এটা তাহলে কত হবে -1 1 2 -1. Okay. Increase harmony. Okay, ঠিক আছে. So it becomes -1 1 -3. 2 minus. So it becomes 3 1 and 4 is positive. Then it is a 1 minus of 2. So 1 minus of 2 means -1. Minus 1. Okay. So similarly, we tell next step ko na C32 -1 whole to the power third row second column. আমি বাহার করিবা 3 to 5 এটা minus রহিব. Then third row third column ଯିବ -1 whole to the power 3 plus 3, right? এটা ବି positive ରହିବ. Okay, আমি just ଦେଖିବ second third means ରହିବ କି या ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ହଉଛି 3 1 1 minus 1 -7. 3 1 1 minus 1. So এটা লাগে -3 and it is becomes -1 la -4 la +4.
+4 Similarly, I mean the third row, third column, you last bit 3 minus 1, 3 minus 1, 1 and 2. Right. So it becomes 6. 6 plus of 1. I mean it will be 7. So Bottoman Amara cofact bar padla Cij or the matrix A. Ketaraiva, Jaha Bala, so we chaliva. Okay, third row pakhara lekhi doji mo -1, 4 and 7. Then the upar -2, 1, 7, -2, 1 and 7. Then the upar -1, -3, -7. -1, -3, -7. Then tame jiba adjoint. Adjoint of A kinva kariba. Na adjoint kinva kariba. Na yara transpose. Transpose kale kona hoba. Cij ra transpose. Cij of A ra transpose. So while you're making the Cij of A transpose, that means the first row become first column. -1, -3, -7. Then -2, 1 and 7. -1, 4 and 7. yes So sir adjoint by padla. Adjoint bala por next step kona na inverse. A inverse calculate kariya bhi adjoint of A divided by determinant of A. So I mean adjoint bag -1, -2, -1. Then it becomes -3, 1 and 4. It becomes -7, 7 and 7. Okay. Kete bar chi hamara -7 -7. It becomes -7. So -7 divide kar jaliba. So kete haba na 1/7. Nale what काम करके 1/7 बाहर रखी दोजी. Right? Minus of multiply kar doji. 1, 2, 1, 3 -1. Then it is the 7 -7 and -7. खाली माइनस है मल्टीप्लाई करते ले बाकी संख्या सब सेम रहेगा. ठीक है जी. देन আমি ଯିବା next step को এটা -4 হবে. Right. Then আমি ଯିବା next step को x calculate କରିବା ପାଇଁ. So x उठा मैं calculate କରୁଛି कोन होची ना a inverse into b. So a inverse हमें पाई जाइए 1/7 whole into 1, 2 and 1. Then 3 -1 -4. Then it is 7 -7 and -7. हमें multiply करिबा b. b रो outcome केते देइछि सब 1 5 -2 1 5 minus. So it is 1 5 minus 2. हमें बर्तन मल्टीप्लाई करिबा से 1/7 रखि दिबा 1/7 एसएस रहिला फर्स्ट रो केते हबो 1 into 1 plus 2 into 5 is 10 plus एटा केते 1 5 minus 2 1 5 minus 2. Yes, sir. yes sir Yes, sir. Minus. Okay, that's right. So it becomes -2. Second term of it now 3 and 5. 3 minus 5 5 plus 8 8. Thereafter it is 7 minus minus 30 5 plus then 14 plus 14. Now simplifying it 1/7 whole into 11 11 2 करे क्या था 9 9 6 8 नहीं 11 रो 5 को लेकर चला 6 6 14 21 रो 35 को लेकर हो जी 35 और 21 35 21 difference minus 14 now पहले आंसर कितना होगा
9/7, 6/7, and minus 13/7. Right? If you do the thing systematically, then what the value of x? X becomes 9/7. Y Sir, becomes the 6/7. -14. 1 4 sir, sita. -14. 14. Okay, 21 and 14. So it become 14. So 6/7 and Z becomes how much? Minus 14/7. Any other? Minus 14 like 2 ही Z becomes to -2. So this is the way to solving it. ठीक है जेते सॉल्यूशन अछि दैट में ही करिवो हमरो 2/2 थाउ ओके आ गोटे जिंस तो आ गोटे फॉर्मेट देखो सपोज लेट्स से क्वेश्चन देछि 3x minus 2y that equals to 0 नहीं जड़ 0 दबानी हमें कौन दबा 1 2 दबा 1 2 3 सॉल्यूशन हला x y z हला 1 2 3 हबो ठीक अछि से अनुसार वैल्यू होगा 3 हला फर्स्ट देन एटी केते अछि -4 3 -4 केते होछि 3 -4 केते हबो -1. ओके then I will नबा y plus z it becomes 3 5 then x x minus let's say x minus 2z नहीं x plus 2z x plus 2z क्या कहते हैं आप 7 right so how to solve this one आपको केमते सॉल्यूशन करियो सेम पैटर्न एक्चुअली सेम पैटर्न 0 हां जो 3 भी -2 नथिबो सेठी रिपोर्ट करियो कोन 3 -2 0 then it becomes 0 1 and 1 it becomes 1 0 and 2 ठीक है then तब जेमति लिखिया था लिखिबो x y and z that equals to -1 5 and 7 then जेमति प्रोसीड करिया था प्रोसीड करिवो बुझेला ax equals to b x equal to a inverse into b okay so we solve the things with the help of your matrix method I mean matrix method रे solution सब जानी दे बर्तमान चलो determinant को how to solve the values of your simultaneous equation with the help of your determinant I mean determinant method रे केमति solution करिबा let's start with 2/2 example then proceed for the solution I mean is what 3x minus y that equals to 2 then x plus y equals to 2 right যদি আমি কহিবা আকো ডিটারমিনেন্ট রে সলিউশন করিবা পাই মানে ক্রামার্স রুল ডিটারমিনেন্ট ইন দ্য সেন্স ক্রামার্স রুল রে সলিউশন করিবা so how to solve it with the help of ক্রামার্স rule first of all আমি যেতে ক্যালকুলেট করিবা x x কোন হবো না আমি dx divided by d নেবা যদি আমি y ক্যালকুলেট করছি dy divided by d নেবা ঠিক আছে তাহলে আমি কোন করিবা প্রথমে d ক্যালকুলেট করিবা ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু বাই করিবা while you calculate the determinant value we take 3 1 -1 and 1 so what is the value of the determinant so देखो एटी केते होची ना 3 4 plus it becomes 10 we have to calculate the value of the dx and dy मतलब আমি dx calculate করছি dx केते हबो ना देखो x रो जेतला আমি सॉल्व करिया जाउचे x रो कोएफिशिएंट जगह रे हमें कांस्टेंट टर्म को पकेबा कांस्टेंट टर्म केते अछि ना 2 2 अछि देन y रो कोएफिशिएंट 8 लिखिबा ताले यार वैल्यू केते होछि ना इट इज 2 रहइबो प्लस ऑफ 2 अगेन 4 होई जाउ सिमिलरली dy हम जेतला कैलकुलेट करिवो सेठी कोन करिवा ना x रा वैल्यू जेम लिखा होतला सेम लिखा हबो जेतो हमें y वैल्यू बाहर करते y जगह रे हमें कांस्टेंट टर्म को पकेगा so कहते हो ना 6 4 minus 2 it becomes 2
Then আমি যেতলে ইকুয়েশন রে পকাইবা the value of x equals to dx divided by d. Then in that case we can take into account, yes, the value of x is to be 1 and the value of y, how to calculating it, the y divided by d. In that case also it becomes not 1. So the value of x is 1 and the value of y is 1. Right? এটা ମୁଁ ଯେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ କହିଲି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ରାଇଟ୍ এই ডিটারমিনেন্ট মেথডে সলভ করি মতে কো শীঘ্র শীঘ্র কো ডিটারমিনেন্ট কেতে হলা Determinant 8. 8. 4 না 8 ক্লিয়ার করো कार कार 8 के जण बाहरला जणकर More sir वाला. समस्तंकर जदी 4 बाहरला तमर केंदी 8 बाहर पड़ले Sir 3 minus 2 0 0 1 1 1 0 તમે 2. એક્સપાન્ડ કરો તમે જે કોણ सी રો જે કોણ કॉलम को एक्सपांड कर सिंपली इसने एनी कॉलम में एक्सपांड करके देखो आंसर 8 हो अरे 8 हो ठीक আছে it is 4 हो मु तो देखसनी 4 होची still then I do take it so okay 8 मु लिख दउची आई मु जानी okay so केते हबो ना 3 whole into 1102 then minus minus वाले plus 2 is plus 2 into 0 1 1 2 thereafter plus 0 into कहते 0 1 and 1 0 so एटी कहते रहला ना 3 रहला एटी रहला 2 minus 0 plus 2 into 0 minus of 1 and it is the 0 so रहला कहते 6 एटी कहते रहला ना minus 2 so the answer is the 4 तो हम क्वाड हो जी 8 है 8 को एंगल है Sir सेटी की भूल गया -1 जगह प्लस नहीं right then कर चलो सॉल्व करो d वाला 4 তাহলে dx কেতে হবে dy কেতে হবে dz -16 8 ঠিক করছো তো dx কেতে হলা -16 নাই নাই सर dx 4 শুনো যেহেতু মু आंसर দে দেইছি x হলা 1 তাহলে কোন জানি তুমি জানি যে dx বাই হলে কেতে dx বাই d dx বাই d হবে so dx by d है d যদি বাহালা নি 4 obviously এটা হি 4 বারি তা 1 হবে না বুঝি পারছടി তুমি কোড ক্যালকুলেশন ভুল ভাল এই দেখো dx 4 বাহারিব dy 8 বাহারিব dz 12 বাহারিব
चेक कर भले चेक कर जदि बाहरुनी 8 किंबा 4 किंबा 12 then I have to be proceed for the solution चेक कर बाहरुची कि नाही dx4 बाहरला dx समझते हैं 4 बाहर Yes, sir. ओके now move to the dy केते बाहर देखो चेक करा जेतेबेले तमे dx कैलकुलेट करछो ए x जागरे तमे कांस्टेंट टर्म को पकेइबो सिमिलरली dy जेतेबेले कैलकुलेट करछो ए जो y रो कोएफिशिएंट जागरे कांस्टेंट पकेइबो dz कैलकुलेट जेतेबेले करछो z रो कोएफिशिएंट जागरे कांस्टेंट टर्म पकेइबो तापर एक्सपांड करियो ठीक है dy 8 बाहरला dy 8 Yes, बाहरला sir. ओके दैट्स Yes, राइट sir. एंड dz चलो dz कैलकुलेट करो dy तो सर 8 बार पहला हां तापर जते सिमिलरली y ताले कहता है ना y equals to dy by d and therefore it becomes 8 divided by 4 it comes to be 2 ठीक है प्रॉब्लम नहीं z कैलकुलेट करो z जेतले कैलकुलेट करछ ना dz by d करिवो dz by d तो dz by d करछ dz ର वैल्यू 12 बाहरिबो चेक करा whether it is 12 or not 12 ओके Yes, ठीक है ठीक है समस्त कैलकुलेट कर दियो ठीक है ओके कैलकुलेशन ठीक ठाक कर प्लस माइनस जदि भूल भाल करिवो ताहले आंसर भूल बाहरिबो बेसिक अलजेब्रा दरकार अलजेब्रा का नॉलेज न रहले हबो नाही ओवर 12 बाहरला ना नहीं Yes, sir. okay Yes, sir. so we complete the term what is called the matrix and determinant how kon rahila permutation combination right permutation Yes, combination अछि Yes, sir. okay ठीक अछि मन चल तळगो permutation and combinations let's tell me what is permutation permutation का कहबा and combination का कहबा combination का कहबा permutation means arrangement and combinations mean grouping Election. or selection okay so arrangement करिया कोन धर हमें तीन जण पिला अछि a b and c तीनटा चेयर अछि केते प्रकार वे रे अरेंज करि परिबा ना इट इज 3 factorial way रे अरेंज करि परिबा 3 factorial means कोन ना 3 into 2 into 1 it becomes 6 but factorial कोन ना factorial means the conjugative multiplication of the number in terms of the descending order 0 factorial मन रखि तो सब बड़ पई 1 ही होबा but there are the different type of arrangements are there let's say
if you take into account there are the n distinct element and we take r element simultaneously, out of that we have to arranging it. So permutation of n and r, or it will be treated as the npr. It can be solved like this way: n factorial divided by n minus r factorial. ঠিক আছে, ধরো তম পাখরে অছন্তি let's say 6 students are there, ଆମେ 4 ଜଣକୁ ନେଇକି ଆମେ arrange କରିବା, right? So how to do it? Let's say the 6p4. 6p4 means 6 factorial divided by 6 minus 4 factorial, right? Outcome kete hobo na 6 factorial divided by 2 factorial. 6 factorial ko ame kente lekhiba na it is lekhiba 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial. 2 factorial lekhiba. Or 2 factorial achi, 2 factorial cancel it out. Then 30 and 12 is there. Kete hobo answer? 360. Huh? सपंजा 30, ये हला 30, ये हला 12, केतला 32 36, okay 360, okay that's right 360. जानी बल्ला केमते मैं अरेंज करूचे, किंतु केते बडे कंस्ट्रेंट थिबो. सपोज हमको लिखा ही जे we take into account, let's say I take my name. Okay, how many letters are there in this particular word? That the 4 letters are there. How you have to arrange the 4 letter? With meaning or without meaning? It is the 4 factorial way. It is the 4 factorial way you can arranging it, right? Because kahi ke 4 factorial na ame sabutaka element nele sete pai 4 factorial, kintu ame dekha sabutaka element naba man kon n au r ditang saman he gala, jodi n r same he gala, so 4p4 hobo. The 4p4 means 4 factorial divided by 0 factorial, or simply we can write down the 4 factorial, right? So 4 factorial in the sense how much? Now 4 into 3 into 2 into 1, right? 4. So kintu suppose moon lekhuche apple, ethi can arrange kariba. How many letters are there? 5 3 letters are there. 5 letter a p p l e. How many are there? 5 letters are there. Kintu 5 factorial ame eti kari pariba nahi. That is not the answer. Kahi ke na repetition rahuchi. जेतो repetition अछि, जेतेरा repetition हबो सेतेरा repetition हमें divide कर देबा सती factorial. So answer हबो केते ना 5 into 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial and cancel it out. It becomes केते होची 60. okay. That's the 60 ways we can arranging the term apple. Similarly, tell me if it is a mathematics is there, mathematics. Okay. How many letters are there? How many letters in mathematics? 11. 11 letters. So 11 letter. 11 letter को केमिते with meaning without meaning arrangement करिबा. जितेरा repetition हबो सेतेरा divide हे जिवो. M occur 2 times. 8 A factor. occur 2 times. Then T also will occur 2 times. So 11 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. यानी हला repetition जहाँ थी वो ताको हमें divide करिबा. Next comes to the next bit. Suppose that is a circular permutation. Circular permutation means like this. So let's say the same string ta chair अछि, जदि हमें straight line होची, ताले हमें 3 जन को बसौचे केते प्रकार बे 3 factorial रे कर दोछु. 3 into 2 into 1. I mean 6 ways are there. किंतु सेही 3 जन को हमें बसेबा गोटे राउंड टेबल चारि पटे. ताले केते प्रकार वे अरेंजमेंट करि परिबा ना एठी हबो n minus 1 factorial. I mean it is only 3 minus 1 means 2 factorial. 2 factorial means only dita way रे हमें ताको अरेंजमेंट करि परिबा. धरा आप देखिबा a b और c अछि, राइट? हमें देखो जे a b c किबा एटा भी सेम हो b c a, सेम थिंग एज c b a, राइट? किंतु हमें जदी ए इंटरपोजिशन को इंटरचेंज कर दोछे
ताले बाकी ये तीनटा ऑप्शन आसी जीवो सेति पई ओनली टू ऑप्शंस आर देयर दैट द टू वे टू अरेंजिंग इट सो सर्कुलर परमुटेशन लाडो को हमें n-1 फैक्टोरियल करिवा then comes to the next bit suppose हमें गोटे हाफ सर्कल रे हमें ताको अरेंजमेंट करिवा ना हाफ सर्कल जे हमें अरेंज करिवा हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल एटा कोडी आसबो जेतले हमें नेकलेस सब थिबो नेकलेस रा डिफरेंट बीट सब थिबो से नेकलेस रा डिफरेंट बीट को हमें केमिति अरेंजमेंट करि परिबा ना दैट इज टू बी हाफ सर्कल रे रहउची सो देयरफॉर जेतिका नंबर थिबो लेस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 दैट मच ऑफ वे हमें अरेंज करि परिबा think of if there is a large number of formulas are there let's say there are the n distinct element or element taken at a time and all the element taken at a time then what is the outcome of it result now n to the sorry r to the power n that the way you have to calculating it suppose let's say there are the n distinct element is that out of then a particular element is always considered then if you select r number of observations then how many we have to arranging it तर ଗୋଟେ एग्जांपल नउची बटे क्रिकेट टीम रे सब वाला पई 14 जण जानती मानक भितरु कैप्टन त खेलिबो ही खेलिबो 11 प्लेयर त खेलिबार अछि कैप्टन त भितर खेलिबो सो दैट मींस हम 11 प्लेयर को सिलेक्ट करि परिबा 14 रु गोटे प्लेयर को हम माइनस कर देबा काहे कि कैप्टन ता 11 प्लेयर भितर कैप्टन ता रहि जीवो चले हमें केते प्रकार वे अरेंजमेंट करबा ना इट इज n-1 p n-1 p it is r factorial that the way we have to arranging it because a particular player is always play जदि हमें कहबा गोटे प्लेयर इज नेवर गोइंग टू बी प्ले सपोज हमें दीटा विकेट कीपर नै छे हमें से दीटा विकेट कीपर गोटे द कैप्टन विकेट कीपर खेलबा अब जो काउ खेलिबे नहीं से जस्ट रिवर्स रिजर्व ही रहबो ताले कोन हबो n-1 p r-1 हमें 10 टा प्लेयर को सिलेक्ट करिबा नॉट 11 प्लेयर को सो दैट इज द वे टू बी arranging the term okay these are the basic formulas related to the arrangement then comes to the combination कोन होचे ना combination means selection suppose that the n distinct element are there हमें ता भीतर 8 एलिमेंट को सिलेक्ट करिबा केमिति सिलेक्ट करिबा ना ncr फॉर्मूला कोन होला n factorial divided by r factorial into n-r factorial एक फॉर्मूला को बेस करके तमे सॉल्यूशंस करिबा suppose let's say in a pack of 52 cards are there let's say two cards are accidentally dropped then how many way those two cards should be extracted or selected from the 52 then it is called now 52 c2 that means 52 factorial divided by 2 factorial into 52 minus 2 factorial right I mean it becomes 52 factorial divided by 2 factorial into 50 factorial ताको सिंपलीफाई करिबा ना 52 into 51 into 50 factorial divided by 2 into 1 into 50 factorial 50 factorial cancel it out then 2 होइबो केते 26 so result कोन रहबो ना 26 into 51 right that the way you have to selecting the things आउ ए परमुटेशन आउ कॉम्बिनेशन काहे के पढ़ा होची कारण तम नेक्स्ट टॉपिक ता अछि दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सो प्रोबेबिलिटी भितरे ए परमुटेशन कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी रा कॉम्बिनेशन एक पाठ पढिबो कारण जब हम परमुटेशन प्रॉब्लम करिबा से प्रॉब्लम रे सब बेले पे परमुटेशन कांसेप्ट आसीबो आउ कॉम्बिनेशन आसीबो साइड बाय साइड हमर आसीबो कोन ना दैट इज कॉल्ड एज द सेट थ्योरी ताको बेस करके हमें probability पढ़िबा जोटा कि हमें कमिंग क्लास से स्टार्ट करिबा ठीक अछि सो दिस इज द बेसिक आइडिया व्हाट इज कॉल्ड एज द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तमे तो प्लस 2 लेवल जे सब पढ़ि चलथिबो से माने करि परिबे इजीली नो प्रॉब्लम इन इट वेरी सिंपल यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज आर देयर द टू फॉर्मूला स्पेसिफिकली गोटे फॉर्मूला हला एनसीआर आ ओडे हला एनपीआर राइट एनपीआर ए दिटा फॉर्मूला सबले मन रखिता n factorial divided by n-r factorial जोटा कि सब वाला में यूटिलाइज करबा ठीक अछि तब डील करता कमिंग क्लास रे हमें पढ़ाइबा कोन ना प्रोबेबिलिटी ओके
ठीक अच्छे ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिलेक्ट क्वेश्चन की हाँ हाँ कौन कह जन किए कौन Sir? कहूँ हाँ बड़ बाटे कह शुभुनी मुगल सर सिलेक्टिव क्वेश्चन पे क्या देबे सर एग्जाम पे सिलेक्टिव मैथमेटिक्स से सिलेक्टिव क्वेश्चन कौन तम प्रोसेस मन को चैप्टर देखियो ना थियोरी सिलेक्टिव किछि थ्योरी अल्प पढ़िबो थ्योरी किसी पढ़िबो प्रॉब्लम भी पढ़िबो मिक्स है की पढ़िबो किंतु प्योर थ्योरी आसीबनी कि प्योर प्रॉब्लम आया आसीबनी मिक्स है पढ़िबो हले बुझिपाछ लाइक माने थियोरी भी लेखिया पड़े ता से प्रॉब्लम हाँ केतरा प्रॉब्लम पढ़िथिबो आ केतरा थ्योरी पढ़िथिबो कारण केवल थ्योरी पढ़ले भी प्रॉब्लम जो माने मैथमेटिक्स स्ट्रांग थिबे से माने कम मार्क पाई जिवे किबा जो माने प्रॉब्लम करियो हेजिटेट करिवे जदि खाली प्रॉब्लम पड़ी जिवो से माने प्रॉब्लम फेस करिवे सेति पई मिक्स अप हेगी पड़ी थाए सब पई बुझिले आगे हां तो सर सही आंसर टिके देथिबे सर सिलेक्टिव नेक्स्ट क्लास में सर ठीक है ओके आगे ओके थैंक यू बाय बाय right now we are